In our last video, we had discussed about the many problems that a new coach faces. And we decided that we will discuss one by one the different problems so that we are able to seek a solution for each one of the problems. Today, I thought of discussing the most important problem, that is, one is choosing your niche, and number two is creating your identity, or we call it as credibility. If you talk about creating credibility in the market, it is a very difficult thing for new coaches because there are already established people in the market. And you need to understand that people actually do not buy your content, but people buy you. But when they don't know you, how will they buy you? That is why in marketing they always say ki people will know you first, they will like you, and then they will buy you. So when that know you and like you stage comes, buying becomes very, very easy. But how do we create it? We all have bought many courses, we have undergone through many courses. They all teach you about becoming a master in certain skills. How do you deliver? What kind of a language you will use? All these they teach, but they never actually teach you the blatant truth of how to get hold of clients, how to bring in new clients, how to create funnels, how to brand it, or how to market yourself, or how to create your own identity. These things are never taught, and what happens in the end? Then we end up buying another course to learn how to create your brand, your own brand, how to market it, and then sell your course. By the time, lot of time is lost because you lose the tempo and momentum with which you passed the initial coaching course. And what happens? So you are relegated to the background. By the time you buck up and come up to that level, already many more batches pass out, and the seniors keep on eating the share that is already available in the market. So it is very important as a coach, you have to create your credibility. See, how do you create your credibility? Like you need to let people know who you are. If you ask yourself, who am I? You know who you are. If you ask me, I will say this is my name and I am doing so and so. But do other people know what you are actually doing? No. So you need to let them know. And secondly, creating content and selling is not a big thing at all, because we all have wasted so many years in creating the perfect content. With the advent of chat gpt, creating content has become the most easiest thing. Even a momos wala or a chai wala is creating content from chat gpt, sorry for that, and putting it on board. So creating content is not a big thing. People can create content copying some coach, create or follow a style by copying someone, but something which cannot be copied is that your original style. So your original style and your original experience, no one can steal it from you. So as a coach, we need to concentrate on that. What is your experience? People listen to you and they want to buy you. When will they buy you? When they feel that your experience is something unique and you have solved a specific problem in that particular area so well that they would like to copy from you or emulate from you. So what we need to have is to identify those experiences in your life, which obstacles you have tackled it so well that would impress any client to buy you. So your experience actually matters. It is not the age or the number of years of experience in the market, but the actual unique experience of a coach is important to sell the content to the client. If you don't have an experience, you may have to create such an experience so that when you speak to the client, it is your own original experience. You can speak with so much of conviction and speak from your gut that it is you who has undergone that experience, and you can convince them with conviction. Yes, I also went through this problem, but following these techniques, I solved this problem and came out successful as a warrior. If you are interested, I can teach you these techniques. You can speak like that with gut and conviction only if that experience is original with you. So stop copying from others, but build your own original brand. Second thing would be to choosing your niche. Seeing by what is trending in the market. If you ask today, the most trending niche would be law of attraction, or for that matter, mindset coach, peak performance coach. These are breathing coach. These are all very trending topics, and people get attracted for making a few bucks. They copy the content and they also become one. Are you a genius in law of attraction? Are you a genius in breathing? No.
then don't get into copying, seeing others, because you will not be able to convince your client with what to say, full of gut and conviction. You will not be able to convince them. Always choose a niche or a subject which you are actually passionate about and you can speak from your soul. People want to hear that from you. People want to know your experience. What was the experience you had? And they would actually want to go through the same experience you went through. So that is what people are actually looking for. The market is actually hungry for such people to share their experience. So never get carried away by what others are doing. So always choose a subject which you are passionate about, which is close to your heart. It could be anything, right? From cooking to making an art, it could be anything, but it should be close to your heart so that you can deliver with lot of love and passion to your clientele. For some of my friends who said ki I should try to explain the same in Hindi, so I will try to do my best and do justice so that I am able to deliver the same content in Hindi to make it little easy. हमने पिछले वीडियो में एक नया कोच का कई प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया, जो वो अपना सफलता की पहले क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है, ये हमने देखा है. वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम उसमें दो निकल के आती हैं. एक तो अपना निश, अपना स्पेशलिटी क्या है, किस चीज़ का वो कोचिंग करेगा, और दूसरा चीज़ है कि अपना क्रेडिबिलिटी, नहीं तो एक आइडेंटिटी कैसे बनेगा. अपना क्रेडिबिलिटी वो बना नहीं पाता एक नया कोच, क्योंकि वो मार्केट में नया है. उसकी पहले बहुत शानदार और सफलता किए हुए लोग ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट है, तो इसलिए नया कोच अपना क्रेडिबिलिटी बना नहीं पाता. और हमें ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि लोग अपना कंटेंट नहीं खरीदते हैं, वो आपको खरीदते हैं. आपको कब खरीदेंगे? पहले वो आपको जानेंगे, आप उनको अच्छा लगे, तब वो आपको खरीदेंगे. तो लेकिन ये प्रोसेस है. हम लोग ने भी कोर्स खरीदा है, पढ़ा है, तुमने भी कोर्स खरीदा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन कोई भी कोर्स हमको यही नहीं सिखाता है अपना ब्रांड कैसे बनाना है, अपने आप को मार्केटिंग कैसे करना है, अपना क्लाइंट को कैसे लाना है. ये सब नहीं सिखाएंगे तो क्या होता है, आप भी, हम भी, और हम जैसे सैकड़ों लोग एक और कोर्स फिर खरीदते हैं ये सीखने के लिए हम अपने आप को मार्केटिंग कैसे करें. तब तक हम सीखें और मार्केट में आए, तब तक हमसे बड़े लोग ऑलरेडी मार्केट में जो है वो अपना नया क्लाइंट लेते रहेंगे, और हमारा बात और भी 1000 लोग पास आउट होके आते हैं. तो दिन ब दिन ये कठिनाई होती जा रही है कि आप अपना सफलता का जो शेयर है वो कम होते जा रहा है. इसलिए बहुत जल्दी एक्शन लेना ज़रूरी है. इसलिए आपका जानकारी लाने के लिए ये है कि इसलिए आपको जो भी चीज़ से बारे में बात करना है वो चीज़ आप सोशल मीडिया में अपना प्रेजेंस को बढ़ाइए. अपना जानकार लोगों को ना जानकार लोगों से बातचीत करना शुरू करिए, ताकि लोग पहले आप जाए. अगर एक सवाल पूछें हुआ मैं, तो मैं जवाब दे दूंगी मैं ये हूँ और यहाँ पैदा हुआ, मैं यहाँ हूँ, ये हूँ. लेकिन अगर आपसे पूछे हु आर यू, तो आप भी ये बता सकते हो. लेकिन आपको जो पता है, मेरे को जो पता है अपने बारे में, क्या ये लोगों को पता है? जब तक ये लोगों को पता नहीं है वो खरीद नहीं पाएंगे. इसीलिए ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है. आप कौन है, आप क्या करते हो, आप क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व करते हो, कितने टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हो, ये बोलना बहुत ज़रूरी है. दूसरा है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, अपना सब्जेक्ट जो चूज़ करोगी जो आपका दिल से जो करीब है. ऐसे कोई सब्जेक्ट जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल अच्छा चल रहा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छा चल रहा है, पीक परफॉर्मेंस कोच अच्छा चल रहा है. दूसरों लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं समझ के उनकी कंटेंट चोरी करके कभी भी ऐसे कोच मत बनना. क्योंकि ऐसे कोच बनने से आप चोरी करके किताब में जो लिखा है वो बोल सकते हो, लेकिन आप अपना आत्मा से बोल नहीं पाओगे. और लोग जो किताब में लिखी हुई चीज़ दे खरीदने के लिए लोग इधर नहीं है, क्योंकि किताब में लिखी हुई चीज़ वो तो अपने आप चैट जीपीटी नहीं तो गूगल से वो पढ़ सकते हैं. आपके पास क्यों आते हैं? क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस, आपको कैसे रहा है एक्सपीरियंस, वो सुनने के लिए आते हैं, वो खरीदने के लिए आते हैं. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक्सपीरियंस की रिलेटेड जो आपका दिल से क्लोज है ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करो, ताकि आप अपने आत्मा से उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो और आपकी बात सुनते ही लोगों को लगे इसमें कुछ वजह है, हम इनको चूज़ करना चाहिए. और ये मेरी जैसे मेरे दिमाग में जो है, मेरी दिल में जो करीब है, ऐसे चीज़ बोल रहे हैं करके वो आपका एक्सपीरियंस को खरीदना चाहेंगे.
आगे हम और भी बाकी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप ट्यून इन रहे। धन्यवाद।